हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं आप सबके सामने पीजीटीआरबी 2022 का क्वेश्चन पेपर और यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन है, जहाँ पे मैंने देखा 110 क्वेश्चन जो है बॉटनी से दिए गए हैं। क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बेसिक से हैं, मतलब 110 क्वेश्चन में से अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आराम से 90 क्वेश्चन तो कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि बाहर से हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है या तो ऐसे जगह से आए हैं जो आप नहीं कर सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पीजीटीआरबी 2024 एग्जामिनेशन, देन वी आर प्रोवाइडिंग a mock test also. In our mock test we are providing handwritten notes, video solution, audio notes and all the thing, and our mock test is all of 600 rupee, and for the joining the mock test you have to contact in the number which are given in our description box. Okay, so मैं तो हिंदी में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको हिंदी बोलने नहीं आता होगा, लेकिन समझ पाते होंगे अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, आपके पास कोई भी पेपर है बॉटनी से रिलेटेड, I am saying if you have any paper from the botany entrance like assistant professor, PGT or MSc entrance of any state, then you have to send on my number. Number is given in description box. I will solve them on my YouTube. Okay? हाँ हाँ, सीख लूंगा मैं इंग्लिश, बिल्कुल सीख लूंगा। चलो क्वेश्चन पे आए। तो पहला क्वेश्चन है, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द परसेंटेज ऑफ सेल वॉल मटेरियल पेप्टिडोग्लाइकन इज, देन all of you know the Christian Gram in 1884 give the Gram staining technique to distinguish between the Gram positive and Gram negative bacteria. He used the crystal violet, iodine and safranin. Okay, and आसानी से उन्होंने बताया कि कैसे आप पता कर सकते हैं कौन ग्राम पॉजिटिव कौन ग्राम निगेटिव। देन आप जब पढ़ते हो ग्राम पॉजिटिव के बारे में, तो ग्राम पॉजिटिव के पास पेप्टिडोग्लाइकन का थिक लेयर होता है जो कि 80 to 90% होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 80%। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एलपीएस लेयर, क्या पूछूं मैं? एलपीएस लेयर पूछूं, कहाँ पे रहेगा आपका एलपीएस लेयर? ग्राम निगेटिव में रहेगा या रहेगा ग्राम पॉजिटिव में? कमेंट सेक्शन में बताना। अब बर्गे मैनुअल्स जो है वहां पे बैक्टीरियोडेल्स कितने फैमिली में इंक्लूड है? देखो, बर्गे मैनुअल इसलिए दिया गया था ताकि हम बैक्टीरिया को उसको मार्फोलॉजी, साइज और मेटाबॉलिज्म के आधार पे पहचान सके, सिंपल। ठीक है, तो बर्गे मैनुअल्स में यही डील किया जाता है। तो बैक्टीरियोडेल्स को यहाँ पे 4 फैमिली में कैटेगराइज किया गया। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन ऑफ कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। तो ट्रांसमिशन ऑफ कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस होता कैसे है? देखो, कोई भी एक प्लांट है उस पे एफिड, एफिड जो होते हैं पतंगा, कीट पतंगा, जानते होगे। तो एक इन्फेक्टेड प्लांट को अगर एफिड उसके ऊपर सक करता है उसके सैप को, तो उसके साथ साथ सैप के साथ साथ उसके अंदर वायरस के पार्टिकल भी चले जाते हैं। फिर अगर वो एक नॉर्मल प्लांट को, हेल्दी प्लांट को जाके बीट करता है, सैप करता है वहां से, तो उसको ट्रांसमिट करा देता है। तो आंसर जो होगा एफिड होगा। अगर इस क्रिया कोलाई का ड्रिंकिंग वाटर में कंटामिनेशन है तो उसमें क्या ज्यादा रहेगा कि इस क्रिया कोलाई का इन्फेक्शन हो जाता है? तो सीवेज हुए, जैसे आप घर वर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाला वाला हम बहा देते हैं ना, तो वही जाता है। अगर आपका ड्रिंकिंग वाटर में सीवेज मिल जाएगा तो वहां पे इस क्रिया कोलाई का इन्फेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलर डेविएशन इन प्लांट आर कास्ट बाई। तो कलर डेविएशन कैसे आता है? तो आपने क्लोरोसिस पढ़ा होगा ये सब करके। तो वायरस का हो जाता है ना, तो वो क्या करा देते हैं, जैसे मोजैक डिजीज करा दे रहे हैं, एलोइंग करा रहे हैं, क्लोरोसिस करा रहे हैं। तो वायरस डिजीज के कारण जो होता है प्लांट में कलर में डेविएशन आता है। एक ऐसा जीन है जो कि कंट्रोल करता है रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस इन एन ओपेरान। तो ओपेरान मॉडल दिया था जैकब एंड मोनार्ड ने 1961 में पाश्चर इंस्टीट्यूट पेरिस में स्टडी करके। तो ओपेरान के बारे में हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे कौन कौन जीन होते हैं? ये रेगुलेटर होता है, ये प्रमोटर होता है, एंड दिस इज ऑपरेटर, एंड देयर आर द स्ट्रक्चरल जीन, दैट इज ZYA। देन क्या होता है यहाँ पे, ये जो रेगुलेटर जीन होता है ये टेट्रामेरिक रेगुलेटर प्रोटीन बनाता है, रेगुलेटरी प्रोटीन। तो इसका काम क्या होता है, ये जाके ऑपरेटर से बाइंड करता है। तो क्या होता है, आपका आरएनए पॉलीमरेज जो होता है प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाता है, तो ये टर्न ऑफ कंडीशन में होता है। तो रेगुलेटर जीन ही होता है जो कि अब ये टर्न ऑफ रहेगा तो ये इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा नहीं, लाइकोपेरान चलेगा नहीं। लेकिन दूसरा कैसे होता है, अगर यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट रहे, तो लैक्टोज क्या होता है, इस ना रेगुलेटरी प्रोटीन से जाके बाइंड कर जाता है। तो रेगुलेटरी प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है जिससे वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाता। आरएनए पॉलीमरेज जाके आपके प्रमोटर से बाइंड करता है, और प्रमोटर से जैसे ही बाइंड करता है इसका होता है ट्रांसक्रिप्शन।
बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है, परमीएज बनता है और ट्रांस एसाइटिलेज बनता है। और लैक्टोज का क्या किया जाता है, विखंडन किया जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिजीज। तो शुगर केन मोजैक इज द वायरल डिजीज, दिस इज द वायरल डिजीज। रूट डिजीज इज अ निमेटोड डिजीज, निमेटोड, एंड दिस इज द फंगल डिजीज। गॉट इट। तो सिट्रस कैंकर इज caused by the Xanthomonas citri, okay, yeah, Xanthomonas ephidodermum. So citrus canker will be the correct answer here. Protective and systemic fungicide have also been applicable to the soil through the irrigation water for the control of. So protect systemic fungicide, these are the fungicide which are used with the irrigation, जैसे खेतों में पानी भर रहे हैं उसके साथ आप मिला रहे हैं, तो ऐसे पैरासाइट को आप कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे डिजीज कॉजिंग एजेंट को कंट्रोल कर रहे हैं जो कि आपके सॉइल बोर्न है, जो सॉइल बोर्न है। ठीक। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ सफरिंग ऑफ प्लांट। अगर प्लांट को कोई डिजीज हो गया है, उसमें अलग अलग चेंजेज आ रहे हैं, उसमें अलग अलग सिम्टम देखे जा रहे हैं, दैट इज द पैथोलॉजी। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। इटियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट, की डिजीज कॉजिंग एजेंट वो क्या है। एपिडेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द पैथोजन, हाउ दिस पैथोजन काज द डिजीज एंड हाउ वी प्रिवेंट द दिस डिजीज कॉजिंग एजेंट। ओके। The next question is scorpion kill the selective insect by two group of toxin known as, then जो स्कॉर्पियन होते हैं कुछ इंसेक्ट को ऐसे मार देते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो जैसे स्कॉर्पियन किसी को मार दिया, काट लिया, तो उसमें डिप्रेसेंट करके टॉक्सिन होता है, उसके पूरे नर्वस सिस्टम को क्या देता है, एकदम रोक देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्लांट इज द कंट्रोल ऑफ, अगर प्लांट में कोई डिजीज है, आप उसको केमिकल ट्रीटमेंट दे के उसको पैथोजन के इफेक्ट को कम कर रहे हैं, तो वो है प्लांट कीमोथेरेपी। ओके। अगला हमारा क्वेश्चन है बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है प्लांट का, उसे कैसे कर सकते हो। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल प्लांट का डिजीज का आप करना चाहते हैं, तो आप वायरस का भी यूज कर सकते हो, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस करके है। बैक्टीरिया, ये एक्चुअली बैक्टीरिया है, वायरस का भी यूज होता है, फंजाई का भी यूज होता है, तो वायरस भी होगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। मोनोक्लिया एक करके आपका ब्रायोफाइट है, तो यहाँ पे आर्किगोनिया के चारों तरफ ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, तो जिसको हम इनवॉल्यूकर बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट। देन इन आवर ब्रायोफाइट द मोस्ट कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous type of sexual reproduction where the female gamete is large and non-motile and the male gamete is small and motile. Got it? The next question is example of heterosporous pteridophyte. Then Coleotum, Lycopodium, and Equisetum is the homosporous pteridophyte which produce a single type of spore which are similar in shape and size, but in like Selaginella, Marsilia, Azolla, okay, Regnilidium, there are two type of spore are produced. That is the megaspore and the microspore. So there are Selaginella will be the correct answer for the heterosporous pteridophyte. Got it? The next question is Quillwort family. The simple name of isoids is Quillwort. Isoids is also called as the Merlin grass. Quillwort is the isoids or Merlin grass. Got it? The next question is sperm lake is associated with. Sperm lake is associated with the megaspore of Marsilia. Actually, in the megaspore of Marsilia, there are small opening through which sperm are entered into the megaspore of the Marsilia. Got it? So sperm lake is associated with the megaspore of Marsilia. Slime papillae are produced in the Anthoceras. Actually, in the Anthoceras, nostoc live in the symbiotic association which form a slime-like appearance in the colony of Anthoceras. So the correct answer should be the Anthoceras here. The next question is hanging aerial roots or prop root are found in. So prop root is found in the ficus. Okay. The next question is Genera Plantarum. Genera Plantarum book was written by the Bentham and Hooker, and this book are representative of the natural system of the classification and published during the 1862 to 1883. Got it? The next question is who classify the plant into dicot plant into the Lignaceae and Herbaceae. Actually, this system is the phylogenetic system of classification, and Lignaceae and Herbaceae term used by the John Hutchinson. Got it? The next question is insectivorous plant.
Insectivorous plant are those plants which grow on the nitrogen deficient soil. These are actually belong to the trophic level 1 and 3 because they can photosynthesize and also can eat the insect. Okay, so these plants are the partially heterotrophic and partially autotrophic. Example are the Nepenthes, Drosera, Utricularia. Okay. The next question is the first organized botanical congress held is so first botanical congress organized in the Paris. Okay. The next question is sorosis. Sorosis is the multiple fruit which are developed from the complete inflorescence. The next question is the function of nucleolus. The function of nucleolus is the ribosomal rRNA synthesis. Ribosomal RNA synthesis is the main function of the nucleolus. Nucleolus found in the nucleus. Okay, and discovered by the Fontana. The gained chromosome with a number of chromosomes. Actually, if they ask about the only gained chromosome, then you have to choose the Lambrus chromosome. But there is asking about the number of chromosomes. Chromosomes is actually the pups-like structure where the actively transcription are occurring. Okay, so the answer should be the polytene chromosome. Polytene chromosome is discovered by the E.G. Balbiani from the salivary gland of the insect. And Lamprey chromosome is discovered by the Luchard from the oocyte of the amphibian. Are you understanding or not? Okay, colchicine. Actually, the colchicine is obtained from the Colchicum autumnales, belonging to the family Liliaceae. This is the actually the metaphagic poison which inhibit the formation of spindle apparatus during the metaphase of the mitosis. Got it? This is the known as the mitotic poison, colchicine. The next question, which of the following is the non-membranous cell organelle? Actually, remember the thing that the cell organelle in which DNA is found, these are the double membrane organelles like the nucleus, chloroplast, mitochondria. These organelles have the DNA, so there are two membranes. And there are some organelles like ribosome, okay, ribosome, basal body, centrosome. These are the non-membranous cell organelle, and rest are all the single membrane. So ribosome have no any membrane. Endoplasmic reticulum is the single unit membrane. Chloroplast have the double membrane structure. The next question is the sequence of prophase first in meiosis. Very simple question from the cell division. We can you can LZ PD square. Leptotin, zygotin, packaging, diplotin, dikinesis. Leptotin, zygotin, packaging, diplotin, and dikinesis. The next question is cell organelle Golgi complex chemical fixative for the Golgi complex. Then if you want to study the Golgi complex structure, then you can use osmium tetroxide or you can use silver nitride. Got it? The next question is example of leaf fiber, monocotyledons. For the leaf fiber, Manila hemp, you can say Manila hemp obtained from the Muja taxalis like banana. Okay. The next question is best college stain in the following. So best college stain, the most common stain used in the college for the practical examination to stain any object or any things. So triphenylmethane dimethyl blue and diisodinephthalal blue bag. This will be the correct answer here. Actually, these are the tough question from the practical botany. Got it. The paraffin is have the high melting temperature range from the 45 to 60 degrees centigrade. Okay. So don't worry, the chances are very less to come this type of question in your examination if you are belonging from the another state, not from the Tamil Nadu. Got it? So next question is angular collenchyma. So remember the thing about the collenchyma. Collenchyma is the only found in the dicot stem on the hypodermis region on the corner of stem and have the pectin deposition and provide the support mechanical support to the plant. So there are three type of parenchyma. Here is the mentioning about the angular collenchyma. So angular collenchyma found in the datura. Got it? So next question is wood parenchyma. Wood parenchyma is actually the fusiform initial which are activated during the secondary growth of the plant. Okay. Ray parenchyma and ray initials. Okay. The next question is core cambium. Actually, the core cambium is activated during the secondary growth. That is the lateral meristem, which help in the increase in girth of the plant.
Okay. The next question is element involved in the stomatal regulation. Okay, stomatal regulation is brought about by the potassium malate theory, which are proposed by the Leavitt. So potassium is the best answer for this. Okay. The next question is optimum temperature for water absorption. So optimum temperature for the water absorption should be the 20 degrees centigrade to the 30 degrees centigrade. Okay, water absorption occur by the two phenomena like the passive water absorption and the active water absorption. Passive water absorption is brought about by the mostly transpiration pool theory proposed by Dixon and Joly. Got it? The next question is the which of the following is the true for the cyclic photophosphorylation? Photolysis of water takes place? No. Photolysis of water takes place during the non-cyclic photophosphorylation. And the photolysis for the photolysis of the water, there are three elements which are the chlorine, magnesium, and calcium are required. Okay, and photolysis of water takes place in the photosystem second. Only one pigment system is involved. Okay, in the cyclic photophosphorylation only PS first is involved, and here two ATP are formed. NAD is reduced to NADH2. No, it is a phenomena of the non-cyclic photophosphorylation, or you can say this is the phenomena associated with the Z scheme which are proposed by the Hill and Weldol. The next point is the accept light. No, photosystem first accept the light of 700 nanometer. High nanometer, high wavelength, low energy, high wavelength, high energy, low wavelength. Okay. The next question is the not true for oxidative phosphorylation. Okay. If they mention about the photophosphorylation, then you have to choose for the structure related to chloroplast. If they mention about the oxidative photophosphorylation, sorry, oxidative phosphorylation, then you have to mentioning about the mitochondria. Then here is the oxidative phosphorylation. Then there are no role of the chloroplast. So thylakoid membrane is associated with the photophosphorylation, not the oxidative phosphorylation. Got it? Thylakoid term given by the Menke. Thylakoid actually the granule part. The next question in the Kelvin cycle, Rubisco perform which kind of reaction? Rubisco actually the most abundant biomolecule present on our Earth, and these perform carboxylation phase of the Kelvin cycle. They Rubisco accept the six carbon dioxide from the environment and convert it into the another chemical. Okay, got it. The next question is the pigment that play a crucial role in photoperiodism. Photoperiodism is an advanced phenomena in the plant physiology which are responsible for the flowering. Actually, the photoperiodic response of the plant, on which photoperiodic response the plant get flower. Okay, so phytochrome is the special pigment. Okay, which help in the photoperiodism. On the basis of the photoperiodism, there are many types of plant like long day plant, short day plant, and the day neutral plant. Okay, got it. Wow, my English is getting good as well. The list of step in the plant breeding. So if you are going to start the plant breeding, so you have to first uh, to create the variation in the plant. Then you have to select that plant, and after that uh, you have to you have to evaluate what type of the plant you are going to sow in your field. And the next step is the release of plant in the big field, and the next step is the multiplication of that plant culture, and after that you have to distribute the new variety of plants. So answer should be the A here. I am just coming back. Okay, the next question is matching type. Emasculation is actually the removal of anther, so A will be matched to the 2. Selection is the selecting the mother plant. Bagging is actually the protection of female flower from the self-pollinated plant, that is the cagging, and pollination is actually the dusting of the pollen. So the answer should be B. The next question is mustard gas actually is the chemical mutagen. Very simple question. The next question is if you want to do the self pollination again and again in the type of plant,
then this will be leads to the pure line. There are no any variation in the plant community. Okay, so leads to the homozygosity or inbreeding depression. Very good. The next question is the mode of selection in plant breeding. So that produce breeder select certain type of plant from their own advantage. If you want to select the plant for the own advantage, then it will be the artificial selection. Got it? The next question is that the increased growth vigor of the yield. When the your hybrid will be the superior than the parents, then it will called as the heterosis or hybrid vigor, and these terms are introduced by the G.H. Searle. Okay. The next question is the which of the following most popular method for studying life form? Then you have to read all about the Ronchial life form. They classify plant into the five group on the basis of perinating organ as like the phanerophyte, therophyte, chemiophyte, cryptophyte, and hemicryptophyte. Got it. The next question is the word ecosystem is coined by the A.G. Tensler in 1935, and the Carl Moebius give the term biosynosis. Okay, four give the term bio 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 biosynosis term called Mobius, and Phoebe is the I am not getting this point. Phoebe gives some term for the ecosystem also. I will tell. Ecosystem had two components like the biotic and the abiotic component. Very simple question. Which of the following the causing acid rain? Acid rain occur due to the oxide of the nitrogen and sulfur. Then here is the mentioning about the nitrogen oxide and HNO3. Then this will be the answer here. The final stage of the ecological succession. Ecological succession is the replacement of the one type of the plant community by the another type of the plant community. Then the last stage or the final stage of the ecological succession will be the climax stage, and succession term given by the Hult in 1885. The next question is the upper surface of the soil saturated zone of water. Then the soil saturated zone of the water is known as the water table. The next question is lepidocarpan. Lepidocarpan is the reproductive organ of the fossil plant. Okay. The next question is the term of fossil is derived from the Fordray term. Okay, Fordray will be the correct answer here. Fossil is the remains of the plant or animal which are the dig out from the soil, and fossil is mostly found in the sedimentary rocks. Got it? Okay, tell me one question. Where the Birbal Sahani Institute of Paleobotany is located? Are you getting my question? I am asking about where is the Birbal Sahani Institute of Paleobotany is located? Pick out the incorrect match. Petrifaction used in the anatomical study. This is correct. Coal balls, great value of paleobotanical history. Okay. Paper coal. Paper coal is the leaves coal in inorganic matrix. No, inorganic matrix. No, organic matrix should be here. So this will be the correct answer here. The most remarkable contribution of Professor Birbal Sahni. So Birbal Sahni discovered the pentazoilan from the Rajmahal Hills of Bihar from the Amarpada district. Okay, Nepania village. Got it? Pentazoilan. Number of era in geological time period. So number of there are four era like is the Paleozoic, Cenozoic, Mesozoic, and Archaeozoic. Okay. So the next question is evolution of plant group termed as the phylogeny. Phylogeny is the all about study of how the plant is evolved from their ancestor. Cantrancia stage found in the Batrachospermum. Batrachospermum is the red algae, but not red in color and not found in the ocean. This is found in the fresh water. Okay. Batrachospermum common name is the frog sperm algae. The next question is upper culate sky found in which fungus? Upper culate sky found in the Escobolus scatigenus. Okay, lichen used for the epilepsy as medicine. So dog lichen, sorry, rock flower actually, rock flower, Parmelia saxatilis is used for the epilepsy. And for the hydrophobia or rabies, there is a dog lichen known as the Peltigera are used. Cladonia rangiferina is the reindeer mouse, and the Evernia purpurea is a best source of the perfume, and Rosella lichen is the best source of litmus paper. Eudodospore in Puccinia have the two-celled, that is the binucleate. The next question is the
In addition to protozoa and algae, the kingdom Protista contain organism called, so all the unicellular eukaryotic organism included in the Protista, and this is known as the slime molds. The next question is the rust of wheat include black rust of wheat. Black rust of wheat is belonging stem, and brown rust is belonging from the leaf, and stripe rust is yellow. Black rust occur due to the Puccinia किससे? Brown rust Rigidata and yellow rust Styriformis and black rust Puccinia graminis etc. The next question is the program of the plant breeding for disease consists of the, so plant breeding program is the initial hybridization following by the systemic selection and selfing. Which of the following is used for the citric acid production? So for the citric acid production, you can use Aspergillus niger as well, Aspergillus clavatus and Mucor preformis. So all of the above will be the correct answer here. Which microorganism used for the alcoholic fermentation are beaver's yeast, that is the beaver's yeast, the Saccharomyces cerevisiae, and from there two enzyme is also isolated, that is the zymase and invertase. Okay, the next question is the flow of energy in biochemical cycle is carried out by the food chain. Okay, here we completed the 70 question. If you अगर आपको देखो अच्छा लगा हो, ठीक है, मैंने इंग्लिश में ट्राई किया है, और आप इफ यू आर फ्रॉम द तमिलनाडु देन आपको बताइए पहले मुझे, हिंदी समझ में आती है? मान लो हिंदी नहीं बोल पाते हो, हिंदी समझ में आती है क्या? अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो आगे के एक दो पेपर मेरे पास आए हैं, तो आप कहो तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मुझे ना इंग्लिश में खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्या आप सर है फिर भी आपको इंग्लिश नहीं आती? अच्छा, आपको हिंदी आती है? हिंदी हमारी राजभाषा है ना, फिर भी हिंदी जैसे नहीं आती है ना, तो लैंग्वेज ना सीखने में टाइम लगता है भैया। देखो हम यूपी बोर्ड वाले हैं, ठीक है, तो इंग्लिश का उतना हमको जरूरत नहीं पड़ा, फिर भी टूटी फूटी बोल लेते हैं। और इंग्लिश में क्या होता है ना कि पहले एक बार सोचना पड़ता है और वो निकलता नहीं, भूल जाते हैं। देखो मैं जैसे पक्सिनिया ग्रामीण टीटीसी ऐसे करके हिंदी में रहता है ना, बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, बहुत सारी चीजें बता लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देखो आप सब। और मॉक टेस्ट ज्वाइन करना हो तो हमको कांटेक्ट कर लेना भाई, और हमारे पास कोर्स भी है ना। चलो गुड, देखते रहो।